Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, so that I know you all are with me live in the session. We just wait for a couple of minutes. I see that people are joining in, and probably we should be good to go with today's Wed Market Live in another couple of minutes from now. Yeah, Sudesh ji, good afternoon to you as well. Great. Others who have just joined in, do let me know. Sensex ji, good afternoon to you. Sudhakar ji, good afternoon. Audio, video clear. Okay, perfect. Sridhar ji, hi, good afternoon. Okay. So I guess we are good to go with today's session. So, Adi ji, good afternoon. Good afternoon, Vinay ji, Sachin ji, good afternoon, guys. So let's start with the mid-market session. So first up with an update on the global markets first. So if you look at the US markets, S&P 500 closed 0.84% lower. Dow Jones closed 0.34% lower, while Nasdaq, which is your tech-heavy Nasdaq, that closed around 1.43% lower. If you look at the US stocks, especially the tech sector yesterday in the United States, that was down nearly 2%. And it has had some rub-off effect on our IT index as well, which is down over 5%. So if you're wondering what's the reason for the fall in IT index today, it's because there's a AI company. It's a US-based AI company named Anthropic. I don't know how many of you all have heard about that. So they have come up with an AI tool that kind of automates everything without the help of coding or without the help of any software engineers. So basically all your sales planning, whether it's financial reconciliation, whether it's legal documents, whether it's compliance, almost everything can be automated with the help of that AI tool. And because IT has a lot of exposure towards US, it has had some impact on our markets as well. So it's not got to do with the fact that there is profit booking in your IT names, like whether it's Infosys, Techem, Wipro, or whether there are any valuation concerns, because this AI tool is a direct threat to the business models of these companies. So I feel like going forward, especially IT sector has been seeing a lot of changes recently. I think going forward, I feel for a lot of IT companies, या तो AI को adopt करना पड़ेगा. Not only IT companies, whether it's me, whether it's you, or even anyone else, going forward, if we want to survive in future, either we have to adopt AI or we have to evolve along with AI. Because if we don't do that, I'm pretty sure we'll all be lagging behind. And I think that is the reason why IT index is down. पहले क्या होता था, ये जो sales planning है, जैसे ये reconciliation है, so people used to pay for these softwares which were very expensive. And now with this help of AI automation, I think you can just automate anything with almost nothing now. So that's a direct threat to the business model of these companies. So Anthropic, that's a leading company. It's very similar, I think, Sam Altman quote for the day. So I think that is what it is. So I think start using AI, at least try to, incorporate AI in your daily lives as well. Learn about different types of prompts that you can give to AI. That is also very important. So I think going forward, I think AI is a thing. I think हम लोग काफी हल्के में ले रहे हैं AI को.
A lot of people are reluctant to even learn about AI, but I feel to survive in the future, I think we need to learn about AI. And I think we can already see that all these legacy software companies now are feeling the heat. If they don't adapt quickly, I think chances are that IT sector might see vast changes, altogether very soon. I think that is the reason why IT index is down around 5% today. So all your IT counters in the US, whether it's Salesforce, Adobe, DocuSign, even your data focused firms like Thomas Reuters, all these companies were down in yesterday's trade. If you look at the Europe markets, Germany was down 0.07%, London is down 0.26%, France is down 0.02%. So even there was profit booking in the Europe markets as well. If you look at Eurostox 50, that was up around 0.15%. If you look at the Asian markets at the current juncture, Hang Seng is up 0.36%. Nikkei is down minus 0.78%. Shanghai is down 0.88%. Kospi again continues to be the best performing Asian index, that is up around 1.57%. If you look at Nifty and Sensex, I think barring the strong gap up opening yesterday, we went sideways today. Also, there is relatively sideways movement in both Nifty and Sensex. Nifty is flat, Sensex is flat as well. If you look at the last 3 months, clearly Kospi has been best performing global index that was up around 30%. But if you see majority of your Europe and the other Asian markets as well as the US markets have been in the range of 2 to 5%. Whereas Kospi has been a clear outlier. Nasdaq is down around 2.4%. Nasdaq is tech heavy because of the fall in the tech stocks yesterday. That has kind of weighed heavily on Nasdaq sentiment. And Nifty is hardly, it's just flat. It's up 0.12%. I think we are still recovering and in the recovery mode here. So clearly, I think Kospi is, the global index that needs to be tracked. Why don't you, Sudhakarji, see, I'm also learning about AI, Sudhakarji. I'm not a subject matter expert yet in AI, but even I'm trying to learn different types of prompts. At least some basic things you can, definitely do on your daily basis. Uh, Now, if you look at the macro indicators, but certainly, I think once I start learning about prompts, once I feel confident, then I'll be able to share some AI related techniques as well. But that's not our core business. So I'm not sure if how much of an AI, but I think there's a lot of use cases of AI in investing as well. In terms of maybe who knows in the future, maybe you can even automate your intraday trades. You just put in your conditions. You just give a brief prompt. Okay, you want us to talk about 20 EMA or ADX has to be above this level or RSI has to be above 60. This, that. I mean, you can give a couple of prompts, and what if there is a software that generates the code for you, and you say you want to run on NSE 500 companies with this volume, with this market cap, etc. You get stocks, and then it even starts searching for those particular setups for those stocks as well, and even trades on your behalf. So I mean, probably there could be a direct integration of OI with your trade setups as well. I feel that is where we are heading in. If you look at the macro indicators, so dollar index, post the fall has seen a sharp pullback from the low of 95.55. It has pulled back over 2%, but still it continues to trade below all the key short-term and long-term moving averages. If you look at the Indian government bonds 10-year yields, there was a spike. We had gone until 6.7%. So higher yields also leads to higher borrowing costs as well. But I think even yields has kind of gone down below the 6.70% mark. If you look at the Japanese yields, it is relatively flat. So we have the RBI policy meet on Friday. So US has kept the rates unchanged. Japan has kept the rates unchanged, and the consensus are that even RBI is going to keep the rates unchanged on Friday. If you look at the US government bonds 10-year yields, it's again at around 4.27%. So nothing much happening on the yields front. VIX, going by the historical trends, VIX usually cools off 1 week post the budget.
we have seen that I think you can see Wix has gone down 8% on next day after the budget, another 7% and another 6% today. So clearly Wix has cooled off post the budget, and that is what the historical trend also shows. And that is what has happened in Wix as well. I think this time, what has also helped India Wix to go down is the fact that yesterday we had the deal announcement that has led to a strong gap up opening yesterday. So clearly फिलहाल के लिए कुछ fear ऐसे नहीं लग रहा है markets पे, but definitely there is fear for the IT companies currently. Ideally this trade deal should have been better for IT companies. In fact, IT company was waiting for India and US का deal जल्दी होने के लिए. But with this AI bomb that has actually come in yesterday, I think that has kind of पूरा सेट ऑफ ही हो गया. मतलब वो जो एक पॉजिटिव ट्रिगर होने वाला था, दैट इज दिस एआई बॉम्ब वाज काइंड ऑफ सेट ऑफ द होल पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर द आईटी इंडेक्स in yesterday's trade. If you look at dollar by rupee, so dollar by rupee यहाँ पे 90.5 पर आ चुका है. So clearly dollar थोड़ा weak होते हुए नजर आ रहा है रुपी के अगेंस्ट. So as long as यूरो $90 के नीचे रहता है, तब तक हमारे मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव साइन रह सकता है. टॉकिंग अबाउट क्रूड ऑयल, सो क्रूड ऑयल पे एक ब्रेकआउट आया था. क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट $70 अ बैरल टच कर दिया था. वहां से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई. ये 5% क्रूड ऑयल तब गिरा जब ऐसे सुनने में आया कि अभी इंडिया रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, और अब ऑयल जो खरीदारी होगी ऑयल की वो यूएस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके वेनेजुएला ऑयल की होगी. तो इसके कारण ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए नजर आया था. इट्स एट अराउंड $67 अ बैरल मार्क, और जब तक ये $63 अ बैरल मार्क के ऊपर है तब तक आई थिंक ऑयल का प्राइसेस पॉजिटिव रह सकता है. सिल्वर की बात करें, सो सिल्वर में आई थिंक एक शार्प करेक्शन के बाद थोड़ा सा पुल बैक मूव नजर आ रहा है. सिल्वर अब $90 एन आउंस के करीब पहुंच गया है. सो अगेन फॉल के बाद थोड़ा सा डिमांड आया है लोअर लेवल से. गोल्ड की बात करें, सो गोल्ड में भी एक पुल बैक नजर आया है पिछले 2 दिन से. एक शार्प करेक्शन के बाद गोल्ड इज एट $5,065 एन आउंस. एंड हो सकता है शायद गोल्ड एंड सिल्वर फिर से एक नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव के लिए तैयार हो रहे, वैसे लग रहा है लुकिंग एट द चार्ट्स हियर. If you look at the FII positioning, so FIIs कल कैश मार्केट्स पे again expected था. Big buying 5,236 crores. आई थिंक इसके पहले उन्होंने 5,000 करोड़ ऊपर का जो बाइंग हुआ था वो 28 अक्टूबर को था. अगर आपको याद है 10,000 करोड़ का बाइंग हुआ था. उसके बाद ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर जैन 3 महीने के बाद हमें 5,000 करोड़ का ऊपर का बाइंग फिगर आया है FIIs के तरफ से. बट ये सिर्फ एक ही दिन है, बट ये सस्टेन होना चाहिए आने वाले 5-10 दिनों में, तब जाके हम बोल सकते हैं कि सेंटिमेंट थोड़ा बदल रहा है FIIs के इंडियन मार्केट्स के प्रति. बट अगर मान लो ये 5,000 करोड़ है, अगर फिर से आज से नेट सेलिंग स्टार्ट हो गया तो फिर इसका कुछ यूज नहीं होगा. वी वांट FIIs टू कंटिन्यू दिस ट्रेंड. अभी उन्होंने एक अच्छा खासा अमाउंट का बाइंग अगर स्टार्ट की है तो यहाँ से यही ट्रेंड कंटिन्यू रहने की उम्मीद रहेगी. दूसरी तरफ लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखे इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो उसमें भी एक जंप आया है. ऑलमोस्ट 12% से हम 17% आ गए. तो ऑलमोस्ट कल 5% एक शॉर्ट कवरिंग देखा गया था. क्लियरली अगर आप देखोगे नेट इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स -1,97,000 से -157 हो गया था. सो क्लियरली जो शॉर्ट पोजीशन से कवर हुए, अभी उम्मीद तो यही है कि अभी तो इंडिया यूएस का डील भी हो गया है. बजट इज ऑल्सो आउट ऑफ दिस थिंग नाउ. Q3 अर्निंग्स ऑलमोस्ट अब खत्म होने के लिए आ गए. RBI का पॉलिसी मीट है, बट अगेन दे आर गोइंग टू कीप द रेट्स अनचेंज. सो आई थिंक अब सारे जो मेन इवेंट्स है वो तो अभी पीछे रह गए, एंड होपफुली इंडिया यूएस डील एक मेजर ओवरहैंग था. तो अभी उम्मीद यही है कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंप्रूव होगा और शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, जिसके कारण मार्केट में एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है. बट लुकिंग एट टुडेज मूवमेंट, ऐसे लग नहीं रहा है कि आज ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हुआ है. बट अगर आप देखोगे इट्स एन एक्सट्रीमली पेनफुल डे इफ यू आर एन ऑप्शन बायर. देखो एकदम टाइट रेंज में निफ्टी मूव हो रहा है यहाँ पे. एग्जैक्टली कल के कैंडल में तो फर्स्ट कैंडल में ही ऑलमोस्ट हमने 600 पॉइंट के करीब गवा दिया था.
ऐसे दिन में हम क्या ही ट्रेड करें, मतलब इतना टाइट रेंज है, देखो इतना छोटा छोटा कैंडल बन रहा है इंट्राडे में, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑप्शन बायर टू ट्रेड। आज के दिनों में अगर कोई पैसा बना सकता है वो है आपका सिर्फ ऑप्शन सेलर। आप रेंज में ट्रेड कर रहे हो, बट ऑप्शन सेलर के लिए रिस्क होगा कि अगर ये रेंज टूट के कोई भी एक डायरेक्शनल मोमेंटम देता है, तब जाके उसमें लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा है। बट इंट्राडे मूवमेंट इज रिलेटिवली साइडवेज। अगर मैं इंट्राडे की लेवल्स की बात करूं तो क्लियर होगा। ये जो जोन है 25,690 का, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और ऊपर की तरफ मुझे लगता है 25,800 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। जब तक निफ्टी यही रेंज में है तब तक साइडवेज ही रह सकता है। अगर 25,800 के ऊपर गए तो थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है ऊपर की तरफ 25,900 25,950 तक। बट अगर नीचे अगर हम 25,690 अगर टूटता है तो हो सकता है फिर से डे लो टेस्ट करे टुवर्ड्स 25,550 25,570। सो दैट इज व्हाट एन आइडियल सिनारियो लुक्स लाइक फॉर निफ्टी। बट फिलहाल के लिए नो ट्रेड जोन में है। निफ्टी एकदम से साइडवेज में है। अगर कल के स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के बाद, कल तो ऑल टाइम हाई भी निफ्टी ने पार नहीं कर पाया। अगर ऑल टाइम हाई देखोगे दैट वाज 26,373 और कल का हाई था 26,341। सो वी डिडंट क्रॉस अ न्यू हाई। और अभी एक छोटा सा डोजी कैंडल ही बना है, अपर विक्स है लोअर विक्स है, सो क्लियरली इंडिसिशन दिख रहा है आज मार्केट्स में। और मार्केट रिलेटिवली एकदम से फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, ओके जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया सेंसेक्स का चार्ट। लेट मी ओपन अप सेंसेक्स एंड लेट मी ओपन अप, अगर हाँ सेंसेक्स का भी अगर हम 5 मिनट चार्ट देखें, सो क्लियरली सेंसेक्स भी इंट्राडे में कुछ भी मोमेंटम नहीं दे रहा है, सिमिलर है निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर जैसे। तो अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, सो सेंसेक्स का अगेन की लेवल होगा नीचे की तरफ 83,500, दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर सेंसेक्स। और अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो 83,900 वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। सो 83,500 83,900 ये जो 400 पॉइंट का जो रेंज है, उसी रेंज में सेंसेक्स शायद घूम सकता है। अगर हम 83,900 के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है टुवर्ड्स 84,200 84,250 ऑन दी अपसाइड। बट अगर हम नीचे 83,500 के नीचे अगर ब्रेक डाउन होता है तो हो सकता है डे लो टेस्ट करे टुवर्ड्स 83,100 83,000। सो क्लियरली निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों ही एकदम टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब एक तो होता है रेंज, एक होता है टाइट रेंज है, तो एक होता है एक्सट्रीमली टाइट रेंज। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्सट्रीमली टाइट रेंज में मूव हो रहा है। सो फिलहाल के लिए आज के दिन तो ऑप्शन बाइंग डेफिनेटली अवॉइड करना, बिकॉज जब मार्केट एकदम एक्सट्रीमली रेंज बाउंड है, आपका विक्स भी एकदम गिर रहा है, सो वॉल्टिलिटी भी एकदम लो है, और आपका प्रीमियम डीके होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं ऐसे सिचुएशंस में। इफ वी लुक एट बैंक निफ्टी, लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो पीएसयूज में, प्राइवेट बैंक्स में, दोनों में थोड़ा सा प्रेशर है। सो क्लियरली बैंक निफ्टी भी एकदम साइडवेज ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी की लेवल्स देखूं तो ऊपर की तरफ 60,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ 60,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो 60,100 60,300 एक्सट्रीमली टाइट रेंज है। अगर हम 60,300 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है टुवर्ड्स 60,500 60,600 तक एक पुल बैक देखने को मिले। नीचे की तरफ अगर हम 60,100 के नीचे ब्रेक करते हैं तो हो सकता है 59,900 लेवल्स तक हमें एक फॉल देखने को मिले बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का भी अगर हम डेली चार्ट देखें, सो कल का एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के बाद एकदम से छोटा सा कैंडल बना है, एक डोजी कैंडल बना है, एकदम थिन बॉडी है। एक थिन अपर वीक है और थिन लोअर वीक भी है। सो क्लियरली आप चाहे निफ्टी देख लो, सेंसेक्स देख लो या बैंक निफ्टी देख लो, एकदम एक्सट्रीमली टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली नॉट अ डे फॉर द ऑप्शन बायर्स, इट्स अ डे वेयर ओनली और ऑप्शन सेलर्स काइंड ऑफ मेक मनी। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्टर्स टू वॉच, अगर आपको याद है हमने कल के सेशन में, उसके पहले मैं आता हूँ। अगर हम पिछले 3 महीने के परफॉर्मेंस देखें, या पिछले चलो 1 महीने के अगर हम परफॉर्मेंस देखें, कौन सा सेक्टर्स है जो एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ में काफी अच्छा किया है। एक है आपका सीपीएसई,
बजट के पहले हमने देखा कि सीपीएसई स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम था, अभी भी करंट मार्केट में भी सीपीएसई स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। मेटल में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है डेफिनेटली। अगर आप देखोगे मेटल इज काफी ऊपर था, बट मेटल काफी सारे मेटल स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आया है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स barring some of the names in capital market, that is up around 3% in the last 1 month. PSU भी काफी strong positive था. Even PSU banks have kind of given up some gains here. But there are three sectors that are not doing well currently. एक है रियल्टी काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, भले एक पुल बैक आया है लोअर लेवल से, स्टिल रियल्टी इज अंडर परफॉर्मिंग। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म भी 7% डाउन है। ऑल योर होटल स्टॉक्स आर काइंड ऑफ डाउन। आईटी में आई थिंक विद द न्यू एआई डेवलपमेंट दैट हैज कम इन, आईटी सेक्टर भी प्रेशर में, दैट इज डाउन अराउंड 4%। इवन ऑटो प्रेशर पे, ऑटो इज ऑल्सो डाउन अराउंड 4% in the last 1 month or so. सो कल के सेशन में हमने आरआरजी देखा था। ओके, लेट मी लुक एट आरआरजी और एक जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ बिफोर वी गो टू आरआरजी, आई हैव टू एक बार मुझे ये देखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। नाउ इफ आई लुक एट द की सेक्टर्स टू वॉच, कल के सेशन में हमने देखा था आरआरजी में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स एक लीडिंग मोमेंटम में था। सेकेंडली हमने पीएससी देखा था, ऑयल एंड गैस देखा था। अगर आपको याद है कल के सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि ये सारे सेक्टर्स थोड़े फोकस में रह सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द की सेक्टर्स एंड द स्टॉक्स टू वॉच आउट, द फर्स्ट सेक्टर दैट लुक्स वेरी गुड एंड लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग इज योर इंफ्रा सेक्टर। अगर मैं इंफ्रा की बात करूं तो इंफ्रा रेशियो चार्ट है, दैट इज योर इंफ्रा बाय निफ्टी का रेशियो चार्ट। that has clearly, you can see that the ratio line is kind of moving upwards, जो clearly एक इंफ्रा सेक्टर का आउट परफॉर्मेंस दर्शाता है। अगर मैं इंफ्रा स्टॉक्स की बात करूं, सो वन स्टॉक दैट लुक्स गुड फ्रॉम द इंफ्रा स्पेस इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। वो आपके ऑयल एंड गैस इंडेक्स में भी आता है। सो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, इट इज अप अराउंड 2%। एक रेंज में ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, और ये रेंज के ऊपर अब ब्रेकआउट मिला है। RSI भी 60 के ऊपर है, DI प्लस हैज क्रॉस्ड ओवर DI माइनस, एंड आई फील जब तक IOC 165 के ऊपर होल्ड करता है, तब तक द ओवरऑल ट्रेंड इज लाइकली टू रिमेन पॉजिटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल के सेशन में हमने पावर ग्रिड देखा था, अगर आपको याद है। सो पावर ग्रिड ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू मूव दिया है, और फॉलो थ्रू मूव के साथ साथ वॉल्यूम में भी एक स्पर्ट देखने को मिला है। DI प्लस ने DI माइनस को क्रॉस ओवर किया। RSI हैज गॉन अबाउट 60। MACD लाइन में अभी ग्रीन हिस्टोग्राम बार्स, एक्सपांडिंग ग्रीन हिस्टोग्राम बार्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो क्लियरली यहाँ पे बुल्स कंट्रोल में दिख रहे ओवर दी बेयर्स, एंड आई फील एज लॉन्ग एज हम 280 के ऊपर है पावर ग्रिड में, द ओवरऑल ट्रेंड इज लाइकली टू बी पॉजिटिव इन पावर ग्रिड एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन BPCL, अगर हम BPCL की बात करें तो BPCL भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, और कल ही BPCL ने एक रेंज ब्रेकआउट दिया था, और आज एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू देखने को मिल रहा है। सो एज लॉन्ग एज BPCL स्टेज अबाउट 370, द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज लाइकली टू बी पॉजिटिव। यहाँ पे MACD लाइन ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, और अब जीरो लाइन की ऊपर की तरफ है, और RSI भी 60 के ऊपर है। सो क्लियरली BPCL में भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, needs to hold about 370. I think as long as it holds above 370, the overall trend is likely to remain positive. So infrastructure stocks, काफी strong trend में. Apart from that, manufacturing is also one other sector, जो कि फोकस में रह सकते हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स में भी काफी स्टॉक्स है जो जिसमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स दिख रहे हैं. सो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग बाय निफ्टीज रेशियो चार्ट. सो क्लियरली यू कैन सी दैट द लाइन इज गोइंग अपवर्ड्स. That indicates that manufacturing sector में भी out performance है. Couple of stocks from the manufacturing space. One would be Siemens India. अगर हम Siemens की बात करें, बीच में एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे था, बट कल के गैप अप के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू मिला है सीमेंस में, और DI प्लस ने भी क्रॉस ओवर दिया है. DI माइनस का RSI भी 60 के ऊपर है, MACD लाइन जीरो लाइन के ऊपर है. So as long as Siemens is able to hold about 3,160, 3,170, हो सकता है Siemens can also continue its up move in the near term. Apart from that, Jindal Steel,
जिंदाल स्टील इनफैक्ट सुबह के सेशन में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था. इट हैड मेड अ हाई ऑफ 1180. वहां से ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स करेक्ट हुआ है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट आया और रीटेस्ट के बाद फिर से एक अपमूव आया यहाँ पे. एडीएक्स राइजिंग है, मतलब क्लियरली बुलिश ट्रेंड स्ट्रेंथ भी है, और आप थोड़ा सा इसको ट्रेल कर सकते हो. मे बी एज लॉन्ग एज हम 1135 के ऊपर ट्रेड कर रहा है जिंदाल स्टील, the overall trend is likely to be positive for Jindal Steel here. Apart from that, ABB India, I think ABB India भी आपके मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में ही आता है. हमें यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला था एबीबी पे. फिर ब्रेकआउट मिलने के बाद 2-3 दिन एक कंसोलिडेशन फेस में चला गया था, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू मूव भी देखने को मिला है. सो आई फील एबीबी काफी टाइम का जो एक डाउन ट्रेंड था, अब वो रिवर्स होके ऊपर की तरफ मूव होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है. And for ABB India, I feel as long as it holds above 5,600, 5,610, the overall trend is again likely to remain bullish. Apart from that, आपके जो PSE stocks है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वो स्टॉक्स में भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है. That is also one another sector that is significantly outperforming Nifty. अगर मैं कपल ऑफ स्टॉक्स की बात करूं, वन विल बी पीएफसी. पीएफसी हमने देखा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ 20-डे ईएमए का, और आज एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू हमें देखने को मिल रहा है. सो आई फील पीएफसी जब तक 385 लेवल्स के ऊपर है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, पुल बैक आया, फिर कंसोलिडेशन आया, फिर से एक अपमूव आया है. So for PFC, it's very important that it holds above 385. As long as it holds above 385, chances are that it is, likely to remain positive. And the last stock that I want to discuss for the day is ONGC. ONGC again, oil and gas में भी आता है. यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ. द अर्लियर ट्रेंड लाइन विच एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस नाउ एक्टेड एज अ सपोर्ट, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू मूव आज देखने को मिला है. सो आई फील एज लॉन्ग एज ओएनजीसी इज अबाउट 250, 255, I feel the overall trend is likely to remain positive for ONGC as well. So infra, manufacturing, PSC, oil and gas, these are some of the sectors that are doing well, and you should rather be, your focus should be on these sectors rather than on underperforming sectors currently. Now, talking about the last segment, which is the concept session for the day. So what we will do is I'll teach you uh, a candlestick pattern again. So there are two types of आपको याद है हमने एक सेशन में हैमर और शूटिंग स्टार किया था. वैसे आज हम लोग पढ़ेंगे एनगल्फिंग के बारे में. There is something called as engulfing candles. तो दो तरह के एनगल्फिंग होता है. एक होता है आपका बुलिश एनगल्फिंग, एक होता है बेरिश एनगल्फिंग. बुलिश एनगल्फिंग को हम डाउन ट्रेंड के बाद देखते हैं. दीज आर योर ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स. और जो आपका बेरिश एनगल्फिंग है उसको हम अप ट्रेंड के बाद देखते हैं. दिस इज योर बेरिश कैंडल्स योर. सो क्या होता है यहाँ पे आपका बुलिश एनगल्फिंग होता है. सो देर इज वन कैंडल, और जो फर्स्ट कैंडल होगा ना वो कभी भी आपका लाल कैंडल होगा. And then there is one more candle that completely engulfs the body of the first candle here. Engulfing matlab covering. So the second body has to be your green body here. मतलब first candle आपका red है, मतलब look at the sentiment, the trend is already down, sellers का presence है, and suddenly ये जो body है, जो जो रेड का जो बॉडी है ना, इट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस ग्रीन हियर. ये जो ग्रीन का जो बॉडी है, यहाँ पे हमें बॉडी टू बॉडी कंपेयर करना है, ना कि विक्स. सो व्हेन द ग्रीन बॉडी कंप्लीटली एनगल्फ्स, एनगल्फ्स का मतलब है कवर, टोटली 100% कवर होना चाहिए. और अगर अगले दिन ये हाई के ऊपर जाता है तो हम बोल सकते हैं कि शायद अब ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है ऊपर की तरफ. और सिमिलरली बेरिश एनगल्फिंग क्या होता है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है तो सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बनता है. सो दिस इज योर ग्रीन कैंडल. और फिर एक क्या होता है यहाँ पे जो लाल कलर का जो कैंडल है, दैट कंप्लीटली एनगल्फ्स द बॉडी ऑफ द ग्रीन कैंडल हियर. सो दिस इज योर कैंडल, ग्रीन कैंडल है, तो ये आपका रेड कैंडल है यहाँ पे. एंड
यहाँ पे क्या होता है, द बुल्स आर इन कंट्रोल, यहाँ पे बुल्स आर इन कंट्रोल, फिर यहाँ पे बेयर्स आते हैं यार। ये जो ग्रीन का जो बॉडी है दैट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ द रेड ईयर, और जैसे ही ये लो ब्रेक होता है देन वी एक्सपेक्ट कि अब ट्रेंड रिवर्स होगा और प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। सो दिस इज योर बुलिश एनगल्फिंग, और ये होता है आपका बेरिश एनगल्फिंग। Bearish engulfing is always seen after an uptrend. Bullish engulfing is always seen after a downtrend here. So that was your concept for the day. I hope you all are kind of finding value add in these concept for the day as well. Okay, so I guess that's all from today's bid market session. Now let us start off with our question and answer. If you have any queries, any doubts, do let me know in the chat box and I'll be happy to answer them. Yesterday, I think, yes, I think everyone is waiting for that fine print of Indo-US deal. I think that will probably come in another couple of days, is what I've read. Bajaj Finance, see, I'm not got a chance to look at the results. But I think Bajaj Finance on the daily chart, it has been holding above its 200-day EMA since the last two sessions. Now, for Bajaj Finance to go up, it needs to hold above 945. As long as it holds above 945, I feel it has a chance to move up higher from the current levels here. Yeah, Manorji, I think you can go for a staggered approach. PFC, you can consider an SL around 385. Whereas NTPC, you can consider around 355 as a support. Backs healthcare avoid करना, डाउन ट्रेड में healthcare stocks are not in a strong trend. लोधा भी avoid करना, रियल्टी भी डाउन ट्रेड में ही है. PGL is also relatively flat. I think avoid all three, Max Health, लोधा and PGL. IT फिलहाल के लिए avoid करना मनीष जी, because IT में थोड़ा uncertainty अब बढ़ गया है. So जब तक फिर से IT recover नहीं होता, तब तक it's better to avoid IT stocks for now. एनसीसी ना, एनसीसी फिलहाल के लिए अवॉइड परमेश्वर जी, बिकॉज सी ओवरऑल द ट्रेंड इज डाउन, द क्लियर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइंस नहीं है. सी निफ्टी ईटीएफ आप कभी भी बाई कर सकते हो. आई मीन अगर आपका होरिजोन इज 5 to 10 years, आई थिंक यू कैन. एंड इफ यू वांट टू डिवाइड बिटवीन निफ्टी गोल्ड एंड सिल्वर, let's say out of 10, 5 out of 10 should be wait for your Nifty. 3 out of 10 should be your wait for gold, and 2 out of 10 should be your wait for silver. So that is how you can bifurcate between silver, gold and Nifty. But agar aapka tenure is horizon is for long term, I think you can definitely look to do that. Adani Enterprise, Adani 1955. I think what you can do is you can rather trail your SL. आप maybe around 2180 पे आपका SL ट्रेल कर सकते हो शोभा जी, सो दैट अगर नीचे भी आता है तो भी आप प्रॉफिट से ही बाहर निकलोगे. बट अगर ऊपर जाता है तो यू कैन कीप राइडिंग द ट्रेंड हियर. REC Limited, but I feel wait for a breakout. This is a breakout level here. Wait for the stock to break out about 380, 385. I think that can be a good level to enter in REC. But for now, I think you can avoid REC. See, Bharat Forge is good. Bharat Forge ने एक strong breakout दिया है, but I think you can probably consider 1530 as an SL for Bharat Forge. Gokex, see, Gokex is already up around 17% here, but I feel थोड़ा सा correction आ सकता है. I think then when it goes up again, probably that could be a good time to enter. Yeah, even your shrimps, Avanti Feeds is also, it's up around 11%. थोड़ा सा correction के लिए रुक जाओ. Maybe I'm not sure if we should be entering at the current levels, considering the fact that it's already gone up by 11%. So maybe if it corrects a bit and then it goes up, probably that could be a good time. But I think Bharat Forge looks good here. Sharda, yeah, it's very good. I think you can hold. I think around 1080, 1085 is where you can keep your support for Sharda Chem.
What is the small case icon in SBI mobile app stands for? Is there an AI tool? I'm not sure if that's an AI tool, Prabodji, but uh, I think those are some baskets that are created. Those are some diversified baskets if you want to, invest in small case. It's so I need to, thoda aur mere ko give me a day, let me look at it again and let me understand that totally, because honestly at this point of time I'm not much aware of whether it's an AI tool, but it definitely doesn't feel like it's an AI tool here जितना मुझे पता है. हो सकता है, हो भी सकता है. But I think give me a day. I think let me look at it, and then because I don't want to give you any wrong answers currently. So give me a day. Let me have a look at that, and probably I can come back to you on that tomorrow. Rakesh ji, yesterday's fundamental team session was useful. Many from this group were equally active. Yeah, glad to know that, Rakesh ji. I think fundamental team puts in a lot of work. Especially for the budget days. I think all the report, relating it to sectors. I think they have done an incredible job. And good to know that you found some value in that. See, Champa ji, avoid karna IT stocks. Like I said, TCS, Infosys, Wipro. Uh, See, you can see blood bath. जब भी blood bath होता है ना, ideally buy करना चाहिए. I agree. But buying into IT stocks right now, it's like catching a falling knife. अगर आपको एक गिरता हुआ चाकू को अगर आपको हाथ से पकड़ना है, आपको दर्द पसंद है तो आप कर लो. बट अगर आपको लगता है नहीं दर्द होगा, आपका यहाँ पे दर्द हो सकता है काफी, then it's better to avoid that. So you should definitely buy when there is blood, but not when there is uncertainty going around. So जब भी एक reversal sign आता है, that is the time then we should be revisiting that stocks again. I've requested them a session by our MF team as well. Yeah, sure. I think that can be done too. GMTC is good. I think you can kind of hold with around 550 is where you can consider having an stock support. Tata Power फिलहाल के लिए I'm not very convinced with Tata Power. It is taking resistance from its 50-day EMA since the last 3 trading sessions. Probably avoid Tata Power for now. Titagar भी avoid करना. I think rail stocks. या नहीं, तीतागर का ट्रेंड इज डाउन. आई थिंक अवॉइड तीतागर एंड टाटा पावर. सिल्वर प्लीज अभी मत एंटर करना मनोहर जी, थोड़ा सा और रोकने दो. सिल्वर मे बी लाइक आई सेड पुल बैक डेफिनेटली आया है, बट we just saw how silver corrected nearly 30-40% from its highs here. See, PSU maybe there is some profit booking. Canara Bank definitely looks weak currently, but I feel till the time it doesn't cross 159, 160, till that time there can be pressure in Canara Bank. HAL, what's the news in HAL? Sorry, I didn't know. I think HAL avoid. I think clearly, it's below its. I think 4,200 is where the support is. I think if it closes below 4,200, I feel the price can move down even further. I think BL is relatively much better than HAL at the current juncture here. How is Gale? Gale, I think very slow moving, low beta stock. No, the trend is down, Rakesh. You can clearly see stock is in a downtrend, and I feel till the time we don't cross 172, 175 on the upside, the overall bias remains sideways to bearish. HAL is out of the race for India's 5th gen stealth fighter jet. Oh, that is the reason why it has fallen. Okay, that's not a positive sign for HAL. अवॉइड करना इन्फोसिस गाइस. मैं कब से बोल रहा हूँ आपको आईटी सेक्टर अवॉइड करना फिलहाल के लिए, फिर भी आप बोल रहे हो मुझे आईटी खरीदना है, आईटी खरीदना है. See, IT is down. Look at Infosys. Why do you want to buy Infosys when it's down around 8%? I know, well, you will get the stocks at attractive prices here, but then wait for, आज ही एक इतना बड़ा news है. You can see that tech stocks were down around 2% yesterday.
आज देखो सारा IT इंडेक्स इज डाउन अराउंड 5%. लेट द वॉलिटिलिटी सेटल डाउन. थोड़ा सा कुछ सर्टेनिटी आने दो, थोड़ा रिवर्सल साइंस देखने के बाद देन वी कैन एंटर. सी अभी 1517 में अगर आप 1600 में भी खरीदोगे ना तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इट स्टिल हैज अ लॉट ऑफ रूम टू गो अप. बट टू एंटर नाउ, बिकॉज हो सकता है आप 1500 में एंटर करोगे, अगर इफ यू आर रेडी टू टेक अ 20% हिट मोर ऑन योर पोर्टफोलियो. इफ यू आर, अगर आपका रिस्क एपिटाइट इतना बड़ा है तो आप डेफिनेटली ले लोगे. अगर आप 1500 है और मान लो ये अगर 1400 तक गिरता है, यू आर ओके विथ sitting with a 15-20% loss from the current levels, then it's your call. But if you are asking me, then it's better to avoid IT for now. थोड़ा सा uncertainty है अभी फिलहाल के लिए. Wait for it. I think AI can change almost everything, I feel. uh, Bottom fishing, see ideally, like, see see how bottom fishing कब करना चाहिए. See, I'm not a big fan of bottom fishing, but let me show you something. Wait. Now, there is one stock, for example, you look at stocks like Keynes, Dixon, Trent, Mahanagar Gas, all these stocks. See, these stocks are falling like this. अब हमें पता नहीं कि ये लो से रिवर्स होगा, ये लो से होगा, ये लो से होगा, ये लो से होगा, ये लो से होगा, कि ये यहाँ से लो होगा. वी नेवर नो व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट एंड वी कैन नेवर इवन कैच द लो पॉइंट हियर. So ideally, if we want to catch a falling stock, what should we do? So थोड़ा सा reversal आएगा. At least wait for a reversal. Okay, now sir, it has reversed. मतलब मान लो अभी 100 से 120 गया, क्या हम यहाँ पे खरीद सकते हैं? Still no. Why? Because see the overall, look at इतना बड़ा फॉल के बाद एक छोटा सा पुल बैक आया है और हमें लग रहा है कि ओके दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल. नो, अवॉइड, ऑलवेज अवॉइड दैट फर्स्ट टिक आफ्टर द पुल बैक हियर. लुक फॉर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. लाइक जब तक आपका जो प्रीवियस हाई है उसके सक्सेसफुली आप ऊपर नहीं जाते तब तक you should be actually avoiding this. So this is your previous high. Now let's say the price kind of moves up till this level and फिर से it goes down. And next time when it moves above this, ये वाला जो zone है यहाँ पे अगर आपको, this probably could be a good zone to enter, because now you know the stock which was in a lower low lower high formation is now started to make a higher low formation, and it has also moved above the previous high here. So rather than entering here, wait for a correction and wait for that next tick. Always wait for that second tick here. And even if you take a chance here, you should have a strict stop loss at this particular level and then probably, because agar niche aa gaya, exit. Then you know you have taken a chance, but that chance has gone waste. But if it goes up, keep your SL here. If it continues to keep going up, keep trailing your SL and have a staggered approach to buy here. I think this is a more meaningful way of looking at bottom fishing. Exactly. Basically, you avoid a dead cat bounce because see, थोड़ा तो structure change होना चाहिए ना. See, ideally, just because the stock has fallen and pullback दिया, this is not a reversal. We don't call this as a reversal here. मतलब ये डाउन के बाद ऊपर आके नीचे आके फिर ऊपर आए, देन हम लोग यहाँ पे एक फेयर प्रोबेबिलिटी के साथ बोल सकते कि ये शायद रिवर्सल हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग होगा, हो सकता है यहाँ पे. So rather than entering at the low or at the first tick, always enter at the second tick, because the chances of you winning has a much more probability than chances of you winning in the first tick here. Algorithmic trading in India is expanding. Yes, it is definitely expanding. Beach mein there were curbs as well, but I feel as and when AI ka presence zyada badhta hai, and I feel algorithmic trading will actually probably dominate in the future. That will come with its own set of risk as well. But I feel gradually we'll move towards I think nobody will manually sit and punch the trades. And a lot of things will be automated. I feel even a lot of people do even automate their trades, especially intraday trades, for the people who don't have time to monitor the markets, but they have a very good setup. They probably let the computer or the system to trade for them. So I definitely feel algorithmic trading has a future. Fin cables, let me see. सी फिन केबल्स ऑल्सो सी सेकेंड टिक नहीं है. देखो अभी भी डाउन ट्रेंड में है. अगर आप ये कंसिडर करोगे तो ये हाई को ब्रेक नहीं किया था यहाँ पे राकेश. ये देखो ये हाई को ब्रेक
अगर ये हाई के ऊपर जाता 800 देन हम लोग मान सकते थे, फिर ये नहीं किया, अब फिर से आ रहा है, बट एटलीस्ट ये हाई के ऊपर जाना चाहिए 800 के ऊपर। आई थिंक जब तक 800 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इट्स बेटर टू अवॉइड इट। Clear, I guess. That's all from today's bid market session, guys. I hope it was informative, and I'll see you tomorrow for the new mid market session. And tomorrow, we'll have a webinar also at 4 o'clock. I'm doing a webinar tomorrow that is on how do you find trending stocks for swing trading and intraday trading. Uh, so that is going to be the topic for tomorrow. Until then, Harish ji, I'll check that. Let me check with that if SBI has a API access for the algo trading. I'll come back to you on that tomorrow. Okay, bye guys. Take care. Stay safe, and I'll see you tomorrow at 12:30 for the mid market session. Bye guys.